हैशटैग आज से पवेलियन का सफर का बाकायदा आगाज शुरू करते हैं आखिरी दफा. लेट्स स्टार्ट ऑफ वसीम. हियर्स अ क्वेश्चन. उसामा शुजात आपका एक्स हैंडल है. उसामा शुजात कहते हैं, व्हेन विल क्रिकेट इवॉल्व फ्रॉम दिस win the toss, win the match kind of situations? How can cricket rules be changed to factor out the toss? This is intellectually a very strong question. It really is. And I asked this question, I've been asking this question for a couple of years now to my fellow colleagues, to cricket ex-cricketers, to broadcasters. कि question ये है कि दोनों टीमों ने इस वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने मेहनत करके 1.5 महीने से आए हैं. इट शुड बी अ फेयर चांस टू बोथ द साइड. टॉस पे गेम डिसाइड नहीं होनी चाहिए. दैट्स व्हाट्स अनॉयज मी मोस्ट ऑफ द टाइम. आई नो आई बॉल्स मिलेंगे, नाइट मैच में लोग भी आएंगे, टीवी पे लोग भी देखेंगे, पीक टाइमिंग होती है, बट इतना खेलने के बाद 1.5 महीने फेयर चांस. टॉस के फैसला नहीं होना चाहिए. उसी पे जहां पे ड्यू आ जाती है, ड्यू में क्या मोस्ट ऑफ द सिटीज ड्यू आती, डे मैच करें, कुछ करें या कवर करें, समथिंग हैज टू बी डन. लेकिन एक और चीज भी है वसीम भाई, मेरे ख्याल में हर गेम में टॉस होता है. अगर देखा जाए तो हर गेम में, कोई किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट में हर गेम में टॉस है. या टेनिस में भी है. टेनिस में भी है टॉस, क्योंकि आप साइड चूज करते हैं, कौन पहले सर्व करेगा. आई नो बट इट्स नॉट दैट क्रूशियल जितना क्रिकेट में. क्योंकि वो एक ही कोर्ट है, दोनों साइड से एक ही जैसी चीज होगी ना, मतलब ये. लेकिन अब जैसे पेनल्टीज पे सॉकर मैच जाता है, उसमें भी टॉस होता है. वो फिर वो चूज करते हैं कि जो गोलकीपर जो है उसको एडवांटेज होता है अगर उसने लास्ट वाले उसमें. आइडिया द क्वेश्चन वाज कि फेयर चांस टॉस पे ये नहीं होना चाहिए कि ये टीम 70% फेवरेट हो गई, ये टीम 30% फेवरेट हो गया आफ्टर द टॉस. दैट्स व्हाट मैं आज जो टॉस हुआ है, रोहित ने बोला कि मैंने बैटिंग करनी थी. हाँ ठीक है, मैं जरा इसके ऊपर आता हूँ, क्योंकि अगला सवाल भी जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. और अगला सवाल जो है वो स्पोर्ट्स कीड़ा. स्पोर्ट्स कीड़ा एक प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स के हवाले से, और वसीम आप भी इनके साथ काम करते हैं, इनकी तरफ से आया है. हाय फैलम B3, great analytical no nonsense show, love from India. Also congrats to our mutual panelist Wasim Akram on the Aussie win. आपको मुबारकबाद दी है उन्होंने. Thank you. Our question to you guys today is, how important was the toss in today's final? अच्छा एक सेकेंड, इनका क्या है एक्स हैंडल? स्पोर्ट्स कीड़ा. Are you guys ready? Yes. तुम भी याद किया. लोगों को समझ आया, बोलिए बता. So basically ये कीड़ा है. जो लफ्ज है, जो गाना है, ये वसीम ने हमें इंट्रोड्यूस कराया है, वो है कीड़े ने फिर याद किया. कीड़े ने फिर याद किया. और ये पता नहीं अगला जो कलाम आ रहा है वो इनका नेक्स्ट उसके लिए तैयार नहीं, अगली किताब के लिए ये इनका पहला शेर है, कीड़े ने फिर याद किया. और ये जो धुन है इसकी भी तरतीब जो है वो मौसीकार वसीम अकरम ने ही दी है, कीड़े ने फिर याद किया. और ये पता नहीं क्यों जब भी वसीम मोइन को देखते हैं हमारे ग्रीन रूम में, तो ये गाना गाना शुरू कर देते हैं, गुनगुना कर जोर जोर से. I think people are very intelligent. They probably understood कि इसका मतलब क्या है, कि why. Okay guys, let's focus on Sports कीड़ा. The question that has come from Sports कीड़ा. Sports कीड़ा said कि आज का फिर टॉस जो था वो इस फाइनल में how important was it, crucial was it? Like I was discussing this little while for a minute before आपके क्वेश्चन से ही, कि टॉस मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप इस तरह के नॉकआउट गेम्स में, सेमीफाइनल्स हो गए, क्वार्टर फाइनल्स हो गए, टॉस पे फर्क नहीं. ऑस्ट्रेलिया में शायद फर्क पड़ता है कि रात को बॉल सीम होना हिलना शुरू हो जाता है, और हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ड्यू से थोड़ा बैटिंग आसान हो जाती है. सो ये किस तरीके से ना लॉन्ग रन ये आज सब शो. मैं कह रहा था वसीम कि आज फर्क तो टॉस से तो नहीं फर्क पड़ा, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि एक बैटिंग करना चाहते थे, उनको बैटिंग मिल गई. एक बॉलिंग करना चाहते थे, बॉलिंग आसान हुई ना. सेकंड बैटिंग में विकेट थोड़ी बेहतर हुई ना सेकंड बैटिंग. लेकिन ट्रेविस हेड, वसीम भाई ट्रेविस हेड नहीं, उन्होंने तो क्या सी आज नहीं. बट ये पिच रीडिंग भी एक आर्ट है, अगर वो और वो बाबर आजम ने कहा था कि मैं 2 लोगों की स्पिन पुट बहुत ज्यादा लेता हूँ, एक मिसबाह हक की और एक इफ्तिमेनिया की. आज फर्क पड़ जाना था ना, असीब बंदा अपने को बिठाया था. अच्छा जी, फहद सिद्दीकी साहब, FF सिद्दीकी आपका एक्स का हैंडल है. फहद सिद्दीकी, FF सिद्दीकी इज योर एक्स हैंडल. आज से पवेलियन में उन्होंने सवाल किया है. Up until today, some Pakistani fans were pretty sure that this event is a BCCI event and everything is fixed so that Team India can win the championship. Since it's not the case now, can I ask your panel to educate us that leave conspiracy and focus on cricket? क्या नाम बताया था? फहद सिद्दीकी. फहद, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, क्या हाल है आपके?
फहद वेरी वैलिड क्वेश्चन। 1.5 महीने से तो मैं देख रहा हूँ इन लोगों को। ये पता क्या होता है, वो कहते हैं ना खाली ज़ेन शैतान दा ज़ेन। जब बंदा फारिग हो ना तो इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाता है। और मैं ये एवरेज बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो टीवी पे बैठते हैं लोग, जो बातें करते हैं। सो इससे पता क्या होता है, इससे हम सब का इमेज ख़राब होता है अनफॉर्चुनेटली। सो थिंक बिफोर यू से समथिंग। अगर कोई थ्योरी होगी, कोई है आपके पास, प्रूफ है, तो देन इट्स ओके। एंड सुनी सुनाई बातों पे वो एडिट करके ये लगाना इट्स जस्ट नॉट नाइस। Yeah, It's just it not- isn't. attention It actually, it actually undermines the fan base, so the entire fan base, because हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं जो क्रिकेट को समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वो जब ऐसी कोई बात होती है ना, तो वो सारे के सारे वो सब कहते हैं यार ये तो सोचते ही ऐसे हैं। That's not the way it is. It's very unfortunate. Please. जी, carry on. Since we are addressing this point, तो मेरा भी एक दोस्त है, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ भेजी है। आई थिंक मुझे ये ज़रूर कहना चाहिए। बिल्कुल प्लेटफॉर्म उन्होंने बोला है कि प्लीज़ पास दिस मैसेज टू ऑल द फैंस फ्रॉम क्रिकेटर्स एंड मीडिया फॉक्स ऑन बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। उन्होंने साथ में ये लिखा है, नॉट टू ट्रोल ईच अदर on social media when the other team loses. At the end of the day, both teams have cricketers who go through a lot when they lose. Yeah. Constructive criticism is good, but creating memes and trolling is just not the right way to go about it. अच्छा, इसमें ट्रोलिंग पे मैं I will completely agree. Memes here is a fun thing. के लिए As ठीक long है, as those memes are within certain boundaries and Respect element parameters. जो है ना, that क्योंकि should we not enjoy some memes जो हमारे आते हैं, जो मतलब which जो for example हम जब हारे इंडिया से तो बहुत सारे memes वहाँ से हमें आए. Some of them were really funny, Funny right? तो हम भी Which we हंसना really चाहते हैं. thoroughly Yeah, you enjoyed. laugh. जिसमें But किसी की some respect ना जाए. जिसमें थोड़ी सी कुछ बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं, आई थिंक उनको मेंटेन करना चाहता है। रऊफ आपका नाम है और आपका एक्स हैंडल है रऊफ _7_। आपने कहा है वसीम अकरम और शनीरा भाभी से, दोनों से आपकी एक रिक्वेस्ट है कि इफ योर यंगर वन takes up cricket, please request her to play for Pakistan. Don't want to lose legendary cricketing genes to the mighty Aussies. I suppose Rauf entirely depends on Aili. She'll be 9 inshallah in December, and it all depends on her what she wants to play to start off with. All right. And on a lighter note, रऊफ भाई ਅਸੀਂ अपना बंदा बचा रहे हैं पहले ही। राना साकिब सईद आपका एक्स हैंडल है। राना साकिब सईद ने कहा है, मैं उनका सवाल समझ गया हूँ, थोड़ा सा आई थिंक उसको मैं प्रॉपर कंपोज कर देता हूँ। डू यू थिंक देयर शुड बी प्ले ऑफ्स like there is in football clubs basically, right? Yeah. क्योंकि जिस तरह आप हुआ ये कि इतना अच्छा खेलते खेलते आकर सेमीफाइनल में एक मैच में आप गलत हो जाएं या फाइनल में कुछ हो जाए, शुड दे बी Eliminated type होना, play off शायद। This was a single league, सबके साथ आपने खेला है। नहीं, I understand. Yeah. But I think now in this day and age, every league have eliminated playoffs because you work so hard to come that far. You don't want to have one bad day and just. बट जो वो आप जो सजेशन देते हैं हमेशा, जस्ट शॉर्टन द फॉर्मेट। Yeah. फिर इट इज पॉसिबल। अब देखिए 45 डेज तो बैठे हुए ना यहाँ पे। Yeah. अगर प्ले ऑफ्स भी आ गया तो एक और एक्स्ट्रा मैच कल भी आना पैना या तो सीधे 3 फाइनल्स कर ले। राइट, ओके। दिस इज एक तो कमेंट है हिना टी की, बीइंग हिना तारिक आपका नाम है। हिना टी आपने कहा है ग्रेट शो फैलम B3, एक्सीलेंट एनालिसिस, वसीम भाईज वन लाइनर्स वर हिलेरियस, वी विल मिस द शो, वी विल मिस ऑल ऑफ यू। मोहित श्रीवास्तव आपका नाम है, आपका एक्स हैंडल है द मोहित से ने सवाल किया है, लव द शो, व्हाट कुड इंडिया हैव डन डिफरेंटली व्हाइल बैटिंग? How batsmen should play on wicket like this? Was it a mistake to play out of form Sky in place of in form Ishan Kishan and a left-handed batsman? Respect to all the panelists. Misbah, I take this to you. Mohit Namin का। आई थिंक जो हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की कि वो अपने रोल्स के मुताबिक खेले हैं और उन्होंने गेम को हावी नहीं किया अपने ऊपर, बड़ा ओकेजन है, ठीक है, इट्स अ फाइनल, बट यू नो बेस्ट आप उसके मुताबिक खेलें। सूर्य कुमार यादव भी आज अपनी गेम नहीं खेले। नॉर्मली वो जिस तरीके से खेलते हैं, आगे अटैक करते हैं, समहाउ इंडिया ने एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आया कि इस मैच में रोहित शर्मा के आउट होने के बाद और विराट कोहली दे वर प्लेइंग डिफरेंटली, बट बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो नज़र आया है कि वो जो बड़ा क्राउड का एक प्रेशर था,
पूरी कौम की एक्सपेक्टेशंस थी, उसके अंदर थोड़ी सी जो नेचुरल उनकी गेम थी, द वे दे वर बैटिंग, द वे दे वर बॉलिंग, वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आया कि वो क्वालिटी कहीं दब गई है. सो बेस्ट वे इज़ नो मैटर जिस किस्म का मर्जी एक आपके सामने ओकेजन है, यू शुड जस्ट गो देयर. ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल सामने है. Yeah, right there. द वे दे नो हाउ उसी तरीके से वो खेलेंगे. डजंट मैटर सेमीफाइनल है, फाइनल है, ये जो मर्जी है. आई थिंक दैट ट्रिक दे मिस्ड. They missed that I have trick. a question from Rafe. I think that's how you pronounce it. Raafae. Rafe, right. Some Rafi, people yeah. still उनका spell it question है, good evening, Assalamu alaikum. Hi all, thank you for the wonderful show. My question for the panel, how do the pitches in US play out? It's fairly unknown conditions for most people. West good Indies point. is fairly predictable, however, would appreciate thoughts on that too. Very, very, very good question. Because the next World Cup is there. Yeah, I don't know कि कितने matches हैं उस World Cup के, I've but played in America भाई, वो जो अभी जो हुआ था फोर्ट लॉरिडल मियामी के पास So that's Broward County का ground है, जहाँ पे हम भी अभी थे. हम खेल के आए हैं. द पिचेस आर लाइक पाकिस्तान, बहुत फ्लैट पिचेस थी, एक्सेप्ट के बहुत यूज पिच आ जाए जैसे आखिरी मैच में थी. Final match वाली थोड़ा जो सा स्लो, बट outfield is good. आउटफील्ड इज गुड. फील्ड इज गुड. एक तरफ विंड बहुत स्ट्रांग ब्लो करती है, अच्छा. लेकिन वो हमारे सीपीएल के मैचेस थे तो प्लेयर्स फ्रॉम कैरेबियन एडेड डोले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ. हम लोग सोचना पड़ता है हमें कि मारा कि नहीं मारा. वो हम भी सोच रहे थे, लेकिन जब छक्के पड़ने पे आते हैं तो हवा वो नहीं हो तो बाहर ही जाने लगे. ऐसे लगता है कि शारजा टाइप वो पिच है, शीन है उसमें, मतलब चमक है वो वहाँ की पिच में भी. जो मैं आई हैव प्लेड लाइक 8 to 10 games वहाँ पे. All right, Arvind _XOX11. Arvind, आपका पैगाम है, and this is, I'm just going to read this out. It's not a question, but it's a really nice thought. He said, though Team India didn't win tonight, but they played like champions throughout the World Cup. And though we are a little sad about not winning the World Cup, we are very, very happy that we've gained Ask the Pavilion in this World Cup. I think that's a very good compliment to all of us. Thank you, Arvind, for that wonderful thought. With that, we're going to take a break. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup. Now, Australia have won the World Cup and they are going to be celebrating. I think they'll be waking up right now in Australia to be celebrating. Yeah, they're 6 hours ahead, so Yeah. it'll be about 5:30 right now. Yeah, so maybe some of them would be waking up to this great news Exactly. and getting into the celebratory mood. Boys, I have a little surprise for you guys. Really? Yeah. So I thought I will show it to you right here because this is the last day that I we're thought together. तुम्हें present दे रहा, तू शो दिखा रहा है. You never know. I might have that तो मिल as गया well. ना आपको. Let's take a look. We've got something for you. ये जरा नजर डालते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. Watch. This is the Pavilion, and you're watching A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app.
Oh, that was a video from our day off, Wasim. Remember Charna Island? This is a beautiful island. What a trip. Would like to thank, क्या नाम है उनका reef? Divers Reef Karachi. Reef, बिल्कुल. Karachi. They're the boys who organize these scuba dives and snorkeling trips. It's a local business, you know, and I like to support local businesses. तो अगर आप कराची में हैं और कराची में आपकी कंपनी है या आपके दोस्त हैं, ग्रुप है पूरे का पूरा, वो जाना चाहते हैं to spend a day of diving. अगर आपने नहीं भी की, you can discover scuba. They will take you assisted dive करवाएंगे आपको, snorkeling करवाते हैं बड़ी जबरदस्त. स्कूबा के लिए वो तैरना जरूरी नहीं है. नहीं तैरना आपको you don't need हाँ आपको मतलब स्विमिंग नहीं आनी चाहिए, आप स्कूबा कर सकते हैं. उसके बावजूद they'll take care of everything. उसकी पूरी devices, equipment, everything comes from them. They arrange a beautiful trip. And I'd also like to thank Mahmood bhai for his speedboat that takes us there. This is the second time that we've done it. Shoaib Malik, this was your first dive in your life. Yeah, Tell me about the experience. This was my first dive, or I've been to Caribbean so many times, but I've never done this, what I've done the other day, and thanks to you. और वो ऐसी feelings है can't be described in words. और actually I cursed myself. कि मैंने पहले क्यों नहीं किया. Oh, there you go. मैंने पहले क्यों नहीं किया. एंड थैंक यू फॉर ऑल द डाइवर्स एंड स्पेशली मैं उनका नाम भूल गया हूँ. उन्होंने खैर मुझे बताया नहीं था, पानी के अंदर बोल नहीं सकते, तो उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया. बट Farhan and Junaid and all those guys basically. Farhan and Junaid and the whole team, they were very helpful. और मतलब मुझे कभी भी वो डर नहीं लगा. और बहुत स्मूथ राइड थी और बड़ा मज़ा आया. और वो जो नीचे जो एक सजदा कर रहा है बंदा, वो आप थे? मैं ही था. जी बिल्कुल. I spotted you. I had the camera at that time. That was मोइन भाई जो आपने वो Spear जो आपने fishing. बुलाया था आरिफ को बिल्कुल. आरिफ जो है उन्होंने हमें बहुत मजे की फिश खिलाई. थैंक यू सो मच. वो पानी में आ रहे थे यूं ट्रे लेके, नीचे पैर नहीं लगे हुए थे, पैर उनके पानी में ही थे, नीचे जमीन कोई नहीं थी, बट ट्रे ऐसे लग रहा था कि Float चल कर के आ रहा है. हाँ चल के, हाँ पता नहीं कैसे आ रहे थे वो. Professional spear fishing guy who lived, born and bred in Mubarak. In the water, in Water Mubarak is his village. life. But incredible. Yeah, so for everybody in Pakistan, if you're ever in Karachi, please go discover the coastal life of Pakistan. And ये बिल्कुल करीब ही है, Mubarak village, 45 minutes की drive है from the Karachi city. And then Charna Island, you can get to the boat from there in about 45 minutes. And it's just a spectacular thing. लगता नहीं है, आपको पता है, it doesn't feel like आप पाकिस्तान में. It looks like you're anywhere else in the world. The weather is ideal as well. Yeah, beautiful. And 2 years ago, when we started the pavilion, पहली दफा भी मैं लेकर गया था, तो Wasim did a dive at that time. I remember. Waqar Yunus did his first ever dive as well. And Misbah Haq's first ever dive was with us. And this was the second time you've done scuba, right? जी जी बिल्कुल. पहली दफ़ा की थी तो इस दफ़ा तो लाजमी थी. बल्कि पहली दफ़ा जब की थी तो उस वक्त भी मुझे अभी लग रहा था कि शायद और रहना है. वो मुझे ऊपर ले आया तो मैंने उनको कहा यार इतनी जल्दी क्यों ले आया. पहले आपको थोड़ा सा एंजाइटी फील होती है, बट व्हेन यू गो इन और नीचे फिर आप जब सांस आपका ठीक हो जाता है नॉर्मली, यू डोंट फील, फिर वो वहाँ से वापस आने को दिल नहीं करता. क्योंकि जो नीचे आप फील करते हैं ना, वो कई दफ़ा ख्वाब आ रहा होता है तो इंसान उसमें देख रहा होता है ऐसी सिचुएशन कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, बड़ी आपको एक नेचुरल चीज़ें नज़र आ रही हैं. वो ऐसी फीलिंग होती है अंडर वाटर. ये शोएब ज़्यादा बेहतर बता सकता है. बिल्कुल ट्रैवलिंग तो की है, ऊपर वाली दुनिया देखी थी सारी, नीचे वाली नहीं देखी थी. हालांकि you go to West Indies to play CPL so many times. But you next time you're there, you have to go do a dive for us. Okay, and you have to share video and footage with us because I know the Caribbean. Careful, I did once snorkeling there and I saw snakes, sea snakes. Yeah. Well, there are sharks there as well in the Caribbean. A lot of them. कोई नाग तो नहीं देखा आप? No. Oh. ये तो बनता है. Close up for Wasim, please. And action. मैं नागा. मोइन भाई तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई. Fantastic. मोहम्मद आपका एक्स हैंडल है पैपी तुशे. Pappy Touche, Mohammed, आपने कहा है the whole point of a knockout tournament is that your nerves get tested and that you perform when it matters most. Having a safety net for teams in knockout stages would diminish the importance and examination of nerves. Do you guys agree? Yeah, that's I think true. Yeah, that is true. You think? वो फिर जो जीतने की खुशी है, ये एक्साइटमेंट है, वो फिर वो नहीं होगी. 3 अगर फाइनल्स हो जाएंगे या इस किस्म की चीज़, जो सेमीफाइनल है या नॉकआउट स्टेज में, फाइनल में आप जो जीतते हैं, जो एक फैक्टर रहता है ये कि
सरप्राइज होना है किसी न किसी टीम ने और डे अच्छा खेलना है, वो मेरे ख्याल में खूबसूरती है और उसको एंजॉय करते हैं सारे लोग जो भी देखने वाले। अगर करना ही है तो T20 फॉर्मेट में कर सकते हैं, जो ICC के इवेंट्स हैं उसमें कर सकते हैं प्ले ऑफ वाला सीन, But still अगर final वो उसको में- सूट करता है। और स्टिल अगर फाइनल में आप करेंगे तो मेरे ख्याल में वो क्या नहीं फाइनल में नहीं, फाइनल में नहीं, Yeah, I get it. Last four teams के लिए उसमें उनके लिए आप T20 में कर सकते हैं। All right, with that, we're going to take another break. When we come back, there's more hashtag Ask the Pavilion on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports in the ARY Zap app. And with that, we're coming towards the last few moments here in the Pavilion for this edition. Hashtag Ask the Pavilion. Mohammad Atif, Atif_ICIAL आपका X handle है. और आपका सवाल है सबसे, Hi, Emperor Kohli, Rohit and Rahul scored for India. But youngsters like Gill, Sky and Iyer couldn't score. Was pressure of big stage too much for the Indian youngsters? Gentlemen. Misbah? आप स्टार्ट करें Yeah, ना। question Felt भी सुनिए। like I think it felt like मुझे लगता है कि जो विराट कोहली हैं वो ग्लू हैं। रोहित शर्मा ने तो अपना काम काफ़ी हद तक कर दिया था, जो वो नॉर्मली जितने मैचेस में जिस तरीके से वो कर रहे थे, वो जो इनिशियल पंच था वो उन्होंने मार दिया था ऊपर से, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। और आई थिंक द डिफरेंस वाज विराट कोहली। विराट कोहली जब भी स्टे करते हैं, थ्रू द इनिंग खेलते हैं पूरा, तो इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप फिर बहुत बड़ी हो जाती है। और शुभमन गिल उस तरीके से थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्म नहीं कर सके जैसे करना चाहिए था उनको, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे। तो वो मेरे ख्याल में फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर इन दो प्लेयर्स पे आया। और आज जब विराट आउट हुए तो उस तरीके से प्रेशर जो है वो हैंडल नहीं हुआ। KL राहुल समहाउ वो फ्लुएंट प्लेयर है, ऐसे नहीं खेलते जैसे उनको खेलना पड़ा। Right. और नीचे से ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल वो एक तो बॉलिंग बहुत अच्छी, वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके। जो ये ज़रूर होता है कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हों उन पे ज़रा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे, जैसे आज फाइनल था, बिगर स्टेज पे थोड़ा सा जो है वो ज़रूर उनकी तरफ टिल्ट होता है ये चीज़। लेकिन जो नए होते हैं उनके नर्व्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत बिल्कुल हाई होते हैं। High होते हैं. Well, because of very All right, folks, we truly appreciate the amount of messages that you're sending us today on hashtag Ask the Pavilion on all the platforms. Unfortunately, we do have to run a clock here as well, so we do apologize because I see there are a lot of questions coming in from the United States, from Canada, from the United Kingdom, even from France. I see that there are questions from Australia, New Zealand. I do apologize. I'm going to have to we're going to have to rest this down for a little bit because we have a lot of important things to say before we sign off for the final time. The VAS vocab, Wasim Akram's vocabulary, we have been doing a lot of work on it. आपको पता है हमने एक पेज से ये कहानी शुरू हुई थी, अब हम जो है इसके ऊपर सफ़े जो हैं वो भर चुके हैं, पूरे की पूरी कहानी एक पूरी दास्तान लिख चुके हैं वसीम अकरम। लेकिन वो कमाल की बातें हैं, क्यों मिसबा शोएब मोइन ज़रा सुने। प्रॉब्लम, स्टेट वे, 100%, यॉर्केट, वाइट बॉल, बोन्स, पोजिशन, प्रोग्राम, जास्ते, हेमिस्ट्रिंग, कुछ लोग तो हेमिस्टीन भी कह देते हैं। सिरमिट विकेट पे खेलेंगे, सिरमिट विकेट की जगह। We just have just too many things there, man. You've done a really spectacular job here. लीका कौन बोल सकता है? जाएगा ना, अभी लीके खेलने इसके। लीका के इधर अंदर। Well, that's just absolutely wonderful stuff here, guys. We really appreciate that. Let me ask you guys this, because I'm sure a lot of our viewers would want to know this very quickly. Or should we take a break and then we come back and we take care of everything? We'll take a break here and we'll see you on the other side. Wait,